आज हम लोग द हिंदू का 2 जुलाई 2021 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो पहला जो न्यूज़ आर्टिकल्स है अबाउट द हाई कोर्ट गिव्स अ पैट ऑन द बैक ऑफ फॉर द स्ट्रे डॉग्स। फिर सेकेंड आर्टिकल है रिलीफ एंड रिकम्पेंस। थर्ड है इन्विजनिंग द पोस्ट पैंडेमिक स्मार्ट सिटी। फिर फोर्थ है PMI सर्वे शोज मैन्युफैक्चरिंग रैंक इन जून। ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कुछ है। ठीक है। नीरव सिस्टर ट्रांसफर 17.25 करोड़ टू गवर्नमेंट अकाउंट। फिर लास्ट में प्रीलिम क्वेश्चन देखेंगे, हम प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द हाई कोर्ट गिव्स अ पैट ऑन द बैक फॉर द स्ट्रे डॉग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 48A बोलता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सेफगार्ड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ द state shall endeavors to protect and improve the environment and safeguard of the forest and the wildlife of the country। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी यही बोलता है 51A में, जो कि इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रिवर वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव compassion for the living creature, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms। आर्टिकल 51A बोलता है कि ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू शो द काइंडनेस एंड लव टुवर्ड्स द नॉन वोकल बीइंग एंड ठीक है फॉर नॉन वोकल बीइंग and concern for their suffering, sympathy, kindliness, etc. Article 51A H looking after the welfare and well-being of the animal and the duties to prevent the inflictions of pain or suffering on the animals. Article 51A G and 51A H to the read with section 3 and 11 of the Prevention of Cruelty to the Animal Act of 1962। ठीक है। तो ये सब है आर्टिकल्स। ठीक है। फिर स्ट्रे और द स्ट्रीट और द कम्युनिटी डॉग्स प्रोटेक्शन अंडर द PCA एंड इट्स रूल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल। ठीक है। उसके अंदर ये सब प्रोटेक्टेड रहता है। एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 इलीगल फॉर एन इंडिविजुअल रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन और स्टेट मैनेज टू रिमूव और रिलोकेट द डॉग। फिर उसके बाद गाइडलाइन ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट क्या बोल रहा है कि regulation of wildlife animals to form a guard and dog partnerships in consultations with the Delhi Police Dog Squad. Dog to be trained to work as a guard dogs and yet to be friendly to the residents of a colony. It is a duty and obligations of every residential welfare association or municipal corporation to ensure that every community dogs in every area has access to the food and water. In the absence of the caregivers or community dog feeders, feeding done at a area designated by the AWABI in consultations with the residential welfare association or the municipal corporations।
इससे रिलेटेड एक प्रीलिम में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है तुम्हारा, इट इज एस्टेब्लिश अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नहीं, ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट द एनिमल 1962। ठीक है, 1960, सॉरी 1960। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है कि इट्स फंक्शन अंडर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नहीं, दिस फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में काम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा और इट्स मेंबर। ये सही है। 6 मेंबर होता है जिसमें 4 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ओनली 3 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल्स है अबाउट द रिलीफ एंड रिकम्पेंस। ठीक है। तो एक्स ग्रेटिया पेमेंट, ग्रेसिया, एक्स ग्रेसिया GRATIA ग्रेसिया पेमेंट, ये क्या है? इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है। तो कोविड पैंडेमिक नेशनल डिजास्टर है। ठीक है। गवर्नमेंट नोटिफाइड करेंट पैंडेमिक एज अ डिजास्टर अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू पे एक्स ग्रेसिया पेमेंट। तो पेमेंट डन एज अ फेवर एंड नॉट बिकॉज ऑफ द लीगल obligations. Initial lacked the finance resources to compensate the every COVID-19 death. फिर later prioritize expenditures in response to the pandemic. फिर बोला कि मतलब कि हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं एक्सपेंडिचर इन रिस्पॉन्स ऑफ द पेंडेमिक का कारण। कोविड पेंडेमिक अनलाइक मोर फ्रिक्वेंट डिजास्टर लाइक साइक्लोन, अर्थक्वेक एंड फ्लड, वन टाइम क्लेम, इसमें वन टाइम क्लेम रहता है। लेकिन पेंडेमिक ऑनगोइंग एंड प्रोलॉन्ग फिनोमिना, पता कितना क्लेम आएगा और कितना को देना पड़ेगा। ठीक है। टफ टू मेक एक्स ग्रेसिया पेमेंट। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट does not mean the government can evade its duties. Compensation amount decided by the center and national disaster authority. Compensation amount मतलब सेंट्रल या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करे, लेकिन कंपनसेट करना जरूरी है। ठीक है। इंटर स्टेट एंड द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर comprehensive registrations of all the interstate and the unorganized worker in the country. Supreme Court deadline of December 31st for all state and union territories to complete the purpose of registrations. Deadlines of July 31st from the centers to make a portal available for registering unorganized workers. सुप्रीम कोर्ट बोला है कि क्रिटिसाइज किया है यूनियन लेबर मिनिस्टर को फॉर ऑल द path and lackadaisical attitudes during this pandemic. Interventions by the Supreme Court जिसमें rejuvenations and assertions of the judicial system of India बोला गया। ठीक है। इससे रिलेटेड GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज द करेंट judicial
interventions during the COVID-19 pandemic by the Supreme Court of India. Next article is about the envisioning the post-pandemic smart city. ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है, एज अ government policies and intervention for development in a various sectors and issue arising out of design and implementation. Welfare scheme for a vulnerable section of the population by the center and state, and the performance of these schemes mechanism, ठीक है, for the protections and beveragement of three vulnerable sections. Important aspects of the government application model success. Yes, sir. अब Ministry of House and Urban Affairs online events to commemorate the 6th year anniversary of the 3 transformation urban mission. तो स्मार्ट सिटी मिशन है तुम्हारा, अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी है, फिर अटल मिशन फॉर अर्बन एंड अर्बन रेजुविनेशन एंड अर्बन रिफॉर्म्स। फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो इसमें स्मॉल सिटी क्या होता है कि बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। फिर स्मॉल सिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि सेलेक्ट अ सेट ऑफ द सिटीज अक्रॉस द कंट्री थ्रू competitions among the states and to transform and make smart the chosen ones. Chosen project will be supported by the center. Concept smart city. Smart city lacks uniform definitions. Smart city technocentric vision, smart homes, high levels of connectivity, massive data collection, and continuous flow of useful information to citizens. Common feature concept in the global north. Global north. Indian city shortcomings. Indian city shortcoming: infrastructure deficit, inadequate water supply, waste management, sewerage and transport arrangement, high level of pollution, frequency, extremes of flood and drought. Missions क्या है? Blended the upgrade civic service and the expensive showpiece project. Investments heavily influenced by the centers. ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंसी evolutions converged with the other infrastructure programs, Atal missions for rejuvenations and urban transformations, Pradhan Mantri Awas Yojana for housing, international agency best practice in the mobilities, transport, energy and reduction of carbon emissions. Estimations क्या बोल रहा है कि 5,924 missions project having the worth of 178,000 crores have been transferred so far. Danish urban design experts, universal values of the cities, serves as a meeting place of the people, inviting
them to spend times aim at prioritizing the pedestrianizations over the motorizations. Indian cities, unlike to attend that structural shift which prioritize people movement over the vehicles. A smart city inclusivity is okay. Availabilities of the road space for bicycles, safe travels, and expanded public transports in post-pandemic time. Adequate opportunity for street vendor in harmony with pedestrianizations and biking. Design prioritized and allocate more of the commons. ठीक है, फिर उसके बाद essential modernization facilities, sensor guard areas, noise and water pollution, provisions for electronic delivery of a citizen service, intelligence public transport, expansions of renewable energy, real-time control room, public dashboard of information. Need every section of the society to have the voice in the process instead of only those who have digital access. ठीक है, फिर स्मार्ट सिटी अवार्ड जो कि integrated command to control the center to the centers of health focus. Pandemic 70 of such centers were to be operated. War rooms, informations decimations. ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या मतलब कि ऑथर सजेस्ट करता है कि हाईलाइट द रोल प्ले ऑफ द पैंडमिक इन द प्रोसेस. पैंडमिक अपॉर्चुनिटी रिव्यू द पैटर्न्स ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, guide the course of 100 or other tons of so far plan map. ठीक है, अब इससे रिलेटेड मीन्स में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में कि democratizing a smart city plan has to ensure that every section of the society has a voice in the process and not merely those who have the digital access. Comment. The next article is about the PMI survey shows the manufacturing sunk in June. ठीक है, तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स. PMI क्या है? PMI है तुम्हारा परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स. ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कि सर्वे बेस्ड इकोनॉमिक indicators है designed to provide a timely insight into the business condition. ठीक है, widely use होता है to anticipate changing economic trends in official data such as GDP, an alternative measure to official data about the economic performance and the business conditions used for financial and corporate professionals to better understand the economic and markets and to uncover opportunities. Compiled and produced globally by IHM IHM मार्केट के द्वारा कंपाइल और प्रोड्यूस ग्लोबली किया जाता है. ठीक है, IHS मार्केट के द्वारा. ये क्या है? ये फॉर मोर देन 40 इकोनॉमिक्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है,
So originally compiled for the manufacturing sector only. Only manufacturing sector फिर बाद में included the sector service और contribution कंस्ट्रक्शन एंड रिटेल सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया. Manufacturing PMI, a survey-based economic indicators designed to provide a timely insight into the changing business conditions in the goods producing sectors. Weighted average of five indices: new orders, output, empowerments, supplies, supplies, supplier delivery times, inventory of a goods and goods purchase. India manufacturing output shrank in June according to these articles. The purchasing managing index in May was 50.8 जो कि जून में 48.1 हो गया. Company are listed optimistics and continues to be shared jobs buying levels falling at the great pace. Weak demands of a reduction of production requirement. COVID-19 restriction curtails the international demand for the Indian goods. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि which of the following statement is correct with reference to the purchasing manager index of Indian. It provide timely insight into changing. It provide timely insight into the changing business condition in the goods production sector. ठीक है, it provide timely insight into the changing business condition in the good product producing sector. सेकंड बोल रहा है कि इट इज कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक. नहीं, ये IHM मार्केट के द्वारा रिलीज करता है. परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, इट इज रिलीज ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होता था, फिर सेक्टर कंस्ट्रक्शन ये सबको इंक्लूड कर दिया. सर्विस सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन ये सबको इंक्लूड कर दिया. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आर्टिकल से नीरव सिस्टर ट्रांसफर 17.25 करोड़ टू द गवर्नमेंट अकाउंट. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में आता है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ओरिजिन 1946 में हुआ था. इन्फोर्समेंट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. इन्फोर्समेंट यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंतर्गत में आता है. फिर उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर द Foreign Exchange Regulation Act of 1947 shifted departments of revenue from administration in 1960. Rename किया गया Enforcement Directorate in 1957. Composition क्या है कि person who are appointed through the direct recruitment. Directorate's officers
from the across the different investigating agencies on deputations, customs and center exercise income tax police. It is headquartered in New Delhi. Regional officers all over the countries headed by the directors of enforcement. Major function क्या है कि investigating violations of foreign exchange management act laws and provision, investing officers of prevention of money laundering act 2002 and 2002, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग केस ऑफ 40 fugitive from the Indian under the Fugitive Economic Offenders Act 2018, adjudicating so case notice issued under the repealed Foreign Exchange Research Act 1973, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। It was enacted to fight against the criminal offense of legalizing the income profit from an illegal source. It was enacted to fight against the criminal offense illegal source। फिर उसके बाद there are 3 stages to the transaction of the money laundering, ठीक है। फिर थर्ड है तुम्हारा कि the enforcement directorate ED is responsible for the investigating officer under the act। हाँ बिल्कुल सही है। तो डी लग रहा है, 1 2 3 सारा सही है। तो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि which of the following statement is correct with reference to the Animal Welfare Board of India। तो एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया मतलब कि एस्टैब्लिश अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टुवर्ड्स द एनिमल 1960 एक्ट 1960, prevention to the cruelty of the animals एक्ट 1960। फिर उसके बाद इट्स फंक्शन अंडर द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो ये सही है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत मैंने फंक्शन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय बोथ द लोकसभा एंड हाउस ऑफ राज्यसभा और द इट्स मेंबर है, ये सही है। तो ये हो जाएगा, तो है ना करेक्ट पूछ रहा है ना, 3 ओनली। फंक्शन अंडर द नेशनल बोर्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ, इट फंक्शन अंडर द मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement are correct with reference to the Animal Welfare Board of India। It established under the Wildlife Protection Act of 1972, हाँ। It functions under the nation of the wildlife member,
ठीक है. It's function under the National Board of Wildlife. And third है तुम्हारा member of the parliament seats by the Lok Sabha, Sabha and the Rajya Sabha are its member. जैसे ही नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द परचेसिंग मैनेजिंग इंडेक्स इसके बारे में तो पढ़ लिया है कि इट्स प्रोवाइड टाइटली इंसाइट इनटू द चार्जिंग बिजनेस कंडीशन एंड इन द गुड प्रोडक्शन सेक्टर से फिर बोल रहा है कि इट्स कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय द आईएचएम तुम्हारा आईएचएम के द्वारा it is released only for the manufacturing sector. It is released only for the manufacturing sector. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 ओनली. ठीक है. फिर उसके बाद ऑफेंडर वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा इट वॉज इनएक्टेड सारा डी आंसर हो जाएगा. ठीक है. फिर मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए कि democratizing the smart city planning has to ensure that the every citizen of the India has a voice in the process and not a function. फिर उसका लास्ट तुम्हारा critically analyze the current judicial intervention during the COVID-19 pandemic by the Supreme Court. फिर please like, subscribe and share the video.